Hello everyone, good morning. I hope you all can hear me. Thanks everyone, you beat me today. Okay, there's a game going on before we start. That's great. And it's great to see you all excited. Good morning everyone. Good morning. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Thank you for the confirmation. We'll wait for a few more people to join in and for our expert, and then we'll start the session. Tomorrow we have a special session on the IPO, guys. We'll update you about the time soon. We will have a special session about the IPO tomorrow or day after tomorrow. We have two IPOs, IGI and Vishal Megamart. Good morning, sir. Can you hear me? Yes, Anuj, very good morning. Great, sir. You can take a minute or two to settle down, share your screen, and then we are good to go. Sure. Good morning, everyone. Welcome to the morning training session where we focus more around equity. We'll start with the market outlook, give you the levels for our indices, and then we'll move towards the stocks. We'll share the stocks on radar, uh, possibly intraday trade right at the go if we have some. We'll share velocity, we'll share conviction delivery idea, and we'll try to take up as many queries as possible. सो जितने डिटेल्ड आपके क्वेरीज होंगे उतने डिटेल्ड हमारे आंसर्स होंगे सो प्लीज शेयर योर क्वेरीज इन द चैट विल टेक देम अप I can see queries are coming up. And for today's morning session, we have Madhur Mundara with us, the Sensex King. We'll be seeing him soon in the after tomorrow session as well. Madhur sir, we are all set. You can turn on your camera, share screen, and then we are good to go. Yes, Anuj, yes, I'm sharing the screen. Your screen is visible, sir. You are also visible. You are audible. We are good to go. Over to you. So, good morning, everyone. Welcome to the morning. So, let's talk about yesterday first. What happened yesterday? So, Nifty opened on a positive note yesterday, but failed to cross its previous day's high and gradually slipped in the first half of the session. That you can see in the chart as well. I will go to the daily chart. आप देख सकते हो यहाँ पे एक kind of से inside bar pattern create हो रहा है निफ्टी में from last couple of session, right? So it showed some swings in the next half of the session. Second half में देखा हमने कि थोड़ा सा volatile swings था, slightly day low की तरफ आ गया था, but in last half an hour it seen a good buying interest from the lower zone and closed near 24,600 zone. So 24,500 निफ्टी का immediate support है और वो hold होते हुए दिख रहा है. We have seen a good tug of war between the bulls and the bears around 24,500 zone, right? कल का जो low था it is around 24,510, right? So, but the only problem is कि it has forming a lower highs from the last three trading session. आप देख रहे हो यहाँ पे तीन चार trading sessions में lower highs form हो रहे हैं and that creates some sort of problem for the bulls. ऊपर में follow buying हमें देख नजर नहीं आ रही है because 24,700 के आसपास resistance लेते हुए दिख रहा है और नीचे में जैसे मैंने बताया कि 24,500 पर support लेते हुए दिख रहा है. So talking about the level जैसे मैंने बता ही दिया है, but जब तक निफ्टी 24,500 होल्ड होते हुए दिख रहा है, we can see the momentum towards 24,700 and then 24,800 level, 800, 850 level, while the supports are clearly seen at the 24,500 and then 24,400 level.
The bias will be slightly positive, though ऊपर से थोड़ा स्लिंग देखने मिला है, but good part के नीचे से बाइंग भी देखने मिल रही है हमें. So the bias will be slightly positive. So 24,500 and the 24,400 are the supports, while upside we can see 24,700 and then 24,850 level. So now talking about the bank nifty. So earlier it was on Wednesday, it was the expiry of the bank nifty, but now the bank nifty expiry is on a monthly. Right, daily chart में आप देख रहे हो forming inside bar from last 5 trading session. So very narrow range is there. बहुत choppy manner में bank nifty trade हो रहा है from last 4 to 5 trading sessions. Right. So bank nifty yesterday opened on a positive note and gained the further momentum after the opening trade in the first initial hour of the session. Right, but failed to hold the sustain at a higher levels and dipped towards the 53,300 zone. So talking about the level for the bank nifty till it holds above 53,250 level, we can see the momentum towards 54,000, and that is and after that the previous lifetime high that comes around 54,467, while the supports are placed at the 53,250 and then 53,000. So these are the levels for the bank nifty, right? We have seen a good action across railway space today. So one stock for the intraday that is on the radar, that is the Tiger Rail. One can buy the CMP 1240 with the stop loss. और ऊपर में हमें लग रहा है कि 1310 का टारगेट आना चाहिए. So one can buy the Tiger Rail 1240 with the stop loss. ऊपर में हमें लग रहा है कि 1310 1320 आना चाहिए. काफी मोमेंटम में स्टॉक. मैंने बोलते ही शायद 10 पॉइंट स्विंग आया है. राइट, 1273 के आसपास हम देख रहे थे, वहां से 10-12 पॉइंट स्विंग आ चुका है. सो वन कैन बाय टाइगर अराउंड, जैसे मैंने बताया कि 1272 1273 के आसपास, 1240 विद द स्टॉप लॉस. ऊपर में हमें लग रहा है कि 1310 1320 आना चाहिए. Sorry, sir, we couldn't hear you actually for the last 5 seconds. Okay, so Tiger Anuj, I hope you pinned the Tiger. Yes, sir. Tiger trade by 1279, stop loss 1240, target 1310. Okay, okay, right. So now Anuj, we can shift to the stock queries now. Sure, sir. Sir, Misthan bought at 17. MISHTHAN. Looks like it's a penny stock, so my suggestion is to avoid such kind of stock. Look at the chart is also very weak on a weekly structure, so better to avoid. Sir, FSL bought at 383. Quite a few times to discuss the FSL and the IT sector overall. So IT sector is a quite positive on the chart, and you can keep the IT stocks for next couple of months or for next 5-6 months. So FSL सेटअप वाइज काफी स्ट्रांग है, और ऊपर हमें लग रहा है कि 450 का टारगेट आना चाहिए इसमें. एंड टॉकिंग अबाउट सपोर्ट, सो अराउंड 340 इज अ स्ट्रांग सपोर्ट. Sir, 24,500 call bought at 157. Suggest stop loss and target. So before that, Anuj, one more stock on the radar for the intraday, that is the Sirma, trading at the 594 level, right, with a stop loss of 575. ऊपर में हमें लग रहा है कि 620 625 का टारगेट आना चाहिए. Can you repeat that once again, sir, please? Yeah, Sirma Tech trading at the 592 level with a stop loss of 575. ऊपर में हमें लग रहा है कि टारगेट 620 625 आना चाहिए.
So Titagar Rail we initiated around 1275, trading at the day high around 1288. So guys, we have two intraday trades. Please ensure you check your screens. We have already shared it. Titagar already in profit. काफी टाइम बाद इसमें एक ब्रेकआउट देखने मिला है विद गुड वॉल्यूम्स, एक रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है टिटागर में हमें. यस अनुज, कंटिन्यू विद द क्वेरीज. We are talking about a 24,500 call, I guess. Yes, bought at 157. Bought at 157. Which expiry? They have not mentioned that. Okay, I guess it's a 12th expiry, the coming expiry tomorrow. Correct. So right now trading at the 149 level. So Nifty till it holds 24,500, you can to be in that call. Momentum में पैसे मिलता है, it's better to exit and book the profit. Sir, your view on Syngene bought at 934. Just give me 1 minute. I am having some issue with the internet. Syngene. Anuj? Sorry? Am I audible? Yes, sir, you're audible now. Yeah, Syngene bought at what price? 934. Okay, so ओवरऑल ऊपर से हमें सेलिंग देखने मिली है सिंजन में, बट गुड पार्ट के इट होल्डिंग इट्स 100 डेमा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड वहां से फिर से बाइंग देखने मिली है. So till it holds 100 DEMA, that level comes to around 850. So till it holds 850, you can be in the trade. And once अगर daily में इसके नीचे closing होती है, it's better to exit around that 850 level. और ऊपर में हमें लग रहा है कि अगर 907 की level cross होती है तो ऊपर में आपको अराउंड फिर से जो आपका बाइंग प्राइस था वहां पे तक के मोमेंटम देखने मिल सकता है. Sir, retail. Okay, so retail. रेलटेल जो ऊपर का सेलिंग प्रेशर था वो तो अब कम हो चुका है, राइट. इट मेड हाई अराउंड 617 इन जुलाई और कंटिन्यू वहां से सेलिंग देखने मिली थी हमें, अराउंड 358 का लो बनाया है. सो उसके बाद से सेलिंग स्टॉप हो चुकी है. गुड पार्ट के कंसोलिडेशन फेज में है, फॉर्मिंग हाई टॉप हाई बॉटम फ्रॉम लास्ट 3-4 वीक्स. सो यहाँ पे आप अगर किसी को बाय करना है तो वन कैन बाय. अगर ये 450 के लेवल क्रॉस होता है, 450 455 के लेवल, तो आप बाय कर सकते हो ऊपर. और ऊपर में हमें लग रहा है कि एक 500 का टारगेट आना चाहिए. सो बाय अबव 455 लेवल और द अपसाइड टारगेट ऑफ 520 लेवल. So we on TAC InfoSec. Update on the Titagar. We initiated the trade around 1275. It made a high of 1295. So keep booking the profit as well, right. एक 20 पॉइंट का स्विंग इसमें आया है, right. Yes, Anuj. Next query is, Sir, TAC InfoSec. can you spell? TAC. TAC Infotech. InfoSec. Okay. So trading at the lifetime high and the stock is on the upper circuit. Setup wise काफी strong है. I guess it's recently listed in last April. So setup wise काफी strong है. Trading at the lifetime high. Dip में अगर मिलता है आपको around 820 level, so one can add that at that point. और setup wise तो काफी strong है because trading at the
लाइफ टाइम हाई एंड शायद स्टॉक सर्किट पे ही चलता है. So I don't know much about the fundamentals, but setup wise काफी strong है. Sir, we own Continental Petroleum bought at 113. Confidence Petro. Yes. We're having some issue with the internet. Confidence Petro. Okay. So it taking the resistance around 85 level. If that level is 90, 92 odd level, and support are seen at the 75 level. So one can buy at the 75 level for the upside target of 90, 92 level. So you've been demand? Okay. So setup wise काफी weak है, right? This is a weekly chart and forming a lower low, lower high from the last almost 10 to 12 weeks. It made a high around 5,400 and trading at the 3,700 as of now. तो immediate support अगर मैं बात करूँ इसका, it is coming around 3500. So support के आसपास आप बाय कर सकते हो. ऊपर से काफी करेक्शन देखने मिला है, तो काफी स्ट्रांग है. Get out about that. So one can buy around 3500. ऊपर में आपको स्लोएसली फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस ऊपर में आपको फिर से 4500 5000 के टारगेट देखने मिलेंगे. Sir, NCC bought at 311. Which stock, Anuj? NCC. Okay, NCC. So stock is in consolidation phase from last 4 to 5 weeks, and that's a good sign. जो सेलिंग थी ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर था वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, एंड स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन फेज. सो सेटअप वाइज काफी यहाँ पे लग रहा है कि जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा अराउंड 330 का, उसके बाद मोमेंटम क्रिएट होगा. So one can buy around the support level that is around 280 290 के आसपास बाय कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लगा अराउंड 330 लेवल. तो 330 अगर सस्टेन होता है और क्रॉस होता है यहाँ पर, तो ऊपर में आपको इसका प्रीवियस ऑल टाइम फिर से देखने मिलेगा अराउंड 365 लेवल. So Zomato 500 quantity at 303. So yeah, one of the favorite counter. In every session we get the query on Zomato. Setup wise काफी bullish है. Look at the monthly chart. इससे better कोई chart नहीं हो सकता है, right? Look at the weekly chart. Weekly chart भी काफी bullish है. थोड़ा सा इस वीक में ऊपर से करेक्शन देखने मिला है 3-4% का, but that's a good opportunity to buy in the dips. अगर if you get the Zomato around 280 260 level, फिर से इसे ऐड कर सकते हो. इसे आपने ऊपर में बाय किया है तो कोई इशू नहीं है, आप बना रह सकते हो. नीचे में आपको अराउंड 280 लेवल मिलता है, तो अगेन एवरेज दैट प्राइस एंड add that around 280 260 level. Sir, Apollo Tires bought at 557. One stock on the radar, Anuj, for the CDI, that's a connection delivery idea. Trading JWL, right? Jupiter Wagon trading at the 506 level. So with a stop loss of 585, ऊपर में हमें लग रहा है कि 545 45 का टारगेट आना चाहिए. CDI is a connection delivery idea basically for the 4 to 5 days, right? So one can buy the Jupiter Wagons Limited. On the verge of the breakout है. Breakout अब तक हुआ नहीं है. It's on the verge of breakout. So one can buy the Jupiter Wagon. 485 with the stop loss. 540 with the target. So update on the Titagar, Anuj.
it is trading at the day high around 1300 level. So one can book the profit in Tiger. We initiated the trade around 1275. It made a high of 1302. So book the profit in Tiger as well. Guys, please book your profits. We have booked profit in the session itself. Sir, Asian Paints 52-week low is good opportunity to buy. Asian Paint. So setup wise काफी weak है, and because of the maybe the competition or the numbers, quarterly numbers, whatever the reason, ऊपर से almost more than 30% correction देखने मिला है. So for long term purpose, one can add the Asian Paint, right? Look at the monthly chart. Monthly chart में भी काफी इसमें breakdown देखने मिला है. The support अगर मैं बात करूँ तो one can buy around 2250 के आसपास आप इसमें buy कर सकते हो for a long term purpose. तो नीचे में अगर डिप में मिलता है अराउंड अगेन यहाँ से 200 पॉइंट का डिप मिलता है तो वन कैन बाय अराउंड द 22550 लेवल 2250 लेवल. Sir, your view on ITI? तो वैसे गुड रन अप इन आईटीआई लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन. आज थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली है बिकॉज इन लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन इट हैज रन अप ऑलमोस्ट मोर देन 30-35%. सो आज थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिला है. वन कैन बाय अराउंड 340 लेवल. अगर 340 के आसपास मिलता है तो वहां पर बाय कर सकते हो. ऊपर में आपको 430 के टारगेट देखने मिलेंगे. Sir, Electropast target, PG Electropast. ब्रेकआउट हमें देखने मिला था 2-3 वीक्स के पहले अराउंड 700 के आसपास. तो वहां से काफी अच्छा रनअप है स्टॉक में, ट्रेडिंग एट लाइफ टाइम हाई एंड सेटअप वाइज काफी बुलिश है. स्लो एंड स्टेडीली आपको ऊपर में 1000 के टारगेट देखने मिलेंगे. अगर किसी को डिप में ऐड करना है तो वन कैन बाय अराउंड 750 लेवल. 750 के आसपास आप बाय कर सकते हो. ऊपर में आपको 1100 के टारगेट देखने मिलेंगे. सो टिटायर का टारगेट ही हिट हो गया हमारा. ट्रेडिंग एट द 1310 लेवल. 1310 का टारगेट हमने दिया था एंड इट मेड हाई ऑफ 1310. सो प्लीज बुक द प्रॉफिट इन टिटायर. काफी अच्छा 30 से 40 पॉइंट का स्विंग हमें देखने मिला है, राइट. Sir, Suzlon? One of the favorite counter. I've seen a good correction in Suzlon from the 85 odd level to the 53. वहां से फिर से रन अप देखने मिला है 50 to 66. So it has a strong base around 50, 55, 60 level. So one can buy in between to 50, 60 level के आसपास आप buy कर सकते हो. And slowly steadily आपको ऊपर में जो उसका previous high था 85 and then the 100, 120 for long term purpose you can see on the chart. So guys, we have a session tomorrow at 11 a.m. on the IPOs which are coming up this week. Don't forget to attend. The event is not yet scheduled. वो event scheduled हो जाएगा. We'll have our VP Sneha Poddar ma'am who will be taking this session. So just a reminder to everyone. Madhu sir, we'll take 2 more queries and then we'll end the session. Your view on SBI port at 833.
Yeah, so good seen. We have seen a good run up in the PSU banks in last couple of weeks, and SBI चार्ट वाइज काफी अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर. वन कैन बाय अराउंड 850 के आसपास आप बाय कर सकते हो. सो एसटीडी आपको ऊपर में लग रहा है कि एक 900 का टारगेट आना चाहिए. So trend bought at 7200. What point can I exit? Bought at 7200. Okay. So stock is in kind of a correction mode और from last almost 4-5 weeks थोड़ा सा रनअप देखने मिला था, बट प्रॉब्लम इसके ऊपर से फिर से सेलिंग देखने मिली है. तो शायद आप जब तक ये स्टॉक होल्ड होता है 6600 के लेवल जब तक होल्ड होता है तब तक आप बने रहिए. अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है इट्स बेटर टू एग्जिट. So guys, that will be all for the morning session. We have 3 sessions tomorrow. Don't forget to join that. And today we have our afternoon session where we'll focus on the indices and see if we can get some trade out of it. Or else we have our stocks. We'll give you some good investment recommendations, solid research. So thanks a lot, everyone. Thanks a lot, Madhur sir, for joining in. Thank you.